सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी. सो civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. So this was said by M.K. Gandhi. So Gandhiji's seminal work in Hind Swaraj is a critique of modern civilization. Gandhiji held modern civilization responsible for the violence in the Indian freedom struggle. He believed and he considered that modern civilization as a disease has stricken both Indians as well as the English alike. So, as a disease, it was curable, but he felt that younger generation was held under the spell of modern civilization, and therefore it was very difficult to see them how it was harming them. So, bodily comforts over the spiritual development was the hallmark of modern civilization. Modernity pet theme is rationality, which has sounded the death knell of faith and religion, and this was further compounded by introduction of modern medicines and doctors who resorted to killing the innocent animals for their medical experiments. So basically, the use of animals for medical experiments, animal products, and using them as components. Indeed, doctors said these people need to lead an immoral life. Now, talking about introduction of railways. So, introduction of railways also lead to fast movement and had its own problems. तो कौन सी problems है रेलवे के साथ? पहला देखिए, frequent travels made people lose their sense of belonging to one place, creating a feeling of rootlessness and thus killing community bonds. Then easy traveling also led to all sorts of people thronging to religious places and thus contaminating the sanctity of these places. So, railways also facilitated the spread of diseases from one city to another. The people worst hit by railways are villagers. How? Railway lines facilitated village crops to be sold in urban markets, leading to shortage of food in villages and then resultant poverty and deaths there. So these are the 4 points. So पहला कौन सा पॉइंट है, देखिए रेलवेज की वजह से फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स जो हैं उससे क्या हो रहा है, उससे एक कम्युनिटी का बॉन्ड जो है वो किल हो रहा है. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज दैट easy traveling also lead people thronging to religious places and thus contaminating the sanctity of that places. So leading to the contaminating sanctity, that is sanctity मतलब the state of or a quality of being holy, sacred, or saintly, or you can sanctity of these places. So sanctity मतलब ultimate importance, or you can say inviolability. So that is inviolability. And next we have the spread of diseases from one city to another. एंड फोर्थ की विलेजेस में तो फूड का शॉर्टेज हो जाता है और जो भी फूड क्रॉप बनते हैं, विलेज के क्रॉप होते हैं, वो अर्बन मार्केट्स में चले जाते हैं. देन टॉकिंग अबाउट लॉयर्स के बारे में हम बात करें. लॉयर्स. सो लॉयर्स आर ऑल्सो एन एविल प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. हाउ? सी, basically in 3 points. So lawyers thrived on the disputes of others, so which out selfish interest they perpetuated rather than solved. Right? Then the Hindu-Muslim tension was largely doing of lawyers who instead of solving the community disputes aggregated them. So this is the first case. And also lawyers also helped the perpetuation of British rule in India by sustaining their judicial system, which
otherwise could not have been manned by British alone. सो लॉयर्स की वजह से क्या हुआ कि परपुचुएशन हुआ ब्रिटिश रूल का इंडिया में. हाउ? बाय सस्टेनिंग देयर जुडिशियल सिस्टम, जो सिर्फ ब्रिटिश अकेले तो कर नहीं सकते थे. So the skewed idea of nation born out the modern civilization and is also attacked by Gandhi. So Gandhiji believed that nations are not coterminous with religious groups. The followers of different faiths in India belonging to the Indian nation. So India has been one nation in ancient times and it remains so in present time as well. So गांधी जी का मानना है कि there was a religion which was above all religion and this religion should be followed by all irrespective of religion domination they belong to. So rest. तो गांधी जी का बेसिकली यही मानना है कि रिलीजन जो है एक ऐसा रिलीजन जो सभी रिलीजन से ऊपर है और सबको मानना चाहिए विदाउट एनी रिलीजियस डोमिनेशन. राइट. अब गांधी जी के और क्या पॉइंट्स हैं इस क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी को लेकर. मशीनरी को लेकर है एक पॉइंट, वो ये कि मशीन जो है वो रिप्लेस कर रही है किसको? ह्यूमन लेबर को मशीनरी रिप्लेस कर रही है एंड thus spreading the unemployment. Though later he changed his point of view a bit, but फिलहाल के लिए ये पॉइंट था उनका, गांधी जी का, कि भाई मशीन जो है वो ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर रही है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. सही बात है. ओके. सो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. सो क्या बेसिकली वो है गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन में. प्रॉबेबली गांधी जी ने रोट करा, इस टोन में रोट करा कि एक बेसिकली गांधी जी, the problem with the Gandhian critique of modern civilization is that it's couched in very stark terms. So probably Gandhi wrote in such a tone to present a caricature एक ऐसी limitation that would attract attention and he managed to do. So the earlier discussion with A.J. Parel shows how Gandhi's book was received in his lifetime. Now basically there are 3 commentaries on Gandhi's critique of modern civilization and अब हम देखते हैं. So बीकू पारेख का क्या कहना है Gandhi's critique of modernity पे. Let's understand this. So Bhikkhu Parikh approaches Gandhi's critique of modernity from 3 angles basically, which are interconnected and flow from each other. So in order they appear in Gandhi's analysis. कौन कौन से हैं जिसको हम एनालाइज करेंगे कि बीकू पारिक का क्या कहना है गांधी के मॉडर्निटी के क्रिटिक को लेके. तो वो 3 एंगल को लेकर कहेंगे. पहला है उनका ह्यूमन नेचर, दूसरा वी विल अंडरस्टैंड रैशनैलिटी वर्सेस फेथ एंड तीसरा उनका कहना है वायलेंट स्टेट. सो गांधी जी क्रिटिसाइज्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन from both western point of view and eastern perspective. western और eastern perspective दोनों से क्या था. He was more sympathetic to that later and primarily saw it through the eye of one of its victim. So बाद में उनको लगा, बट पहले उन्होंने जो उसको एनालाइज किया था गांधी जी ने, एक प्रॉब्लम देखी थी किसी विक्टिम की कि भाई मशीनरी की वजह से या मॉडर्निटी की वजह से ये प्रॉब्लम है. ओके. So now let's understand about human nature. Human nature, lack of self-restraint. So basically, if the human nature is depicted as selfish, then obviously the civilization based on it would be negative. So now modern civilization privileged the body over the soul. The body over the soul, and which lead to 2 consequences. Which 2 consequences? Number 1, self-interest, and number 2 is unrestrained self-indulgence.
सो बेसिकली भाई अगर हम ह्यूमन को एक एज अ सेल्फिश लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली जो सिविलाइजेशन है वो अच्छी तो होगी नहीं, वो नेगेटिव होगी, बुरी होगी। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो प्रिविलेज करती है, किसको प्रिविलेज देती है? बॉडी को प्रिविलेज देती है ओवर द सोल, यानी आत्मा से पहले वो अपना सेल्फिशपन देखती है। सो जिसकी वजह से सेल्फ इंटरेस्ट आता है। दो कंसिक्वेंस होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, और दूसरा कंसिक्वेंस होता है अनरिस्ट्रेन्ड सेल्फ इंडल्जेंस। इसका क्या मतलब है? दोनों वर्ड्स का मतलब बताती हूँ। सो सेल्फ इंटरेस्ट मतलब अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट, जिसमें हम ये भी कंसिडर नहीं करते कि दूसरे का फ़ायदा है नहीं है, अपना फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। और अनरिस्ट्रेन्ड सेल्फ इंडल्जेंस का क्या मतलब है? सो दिस मीन्स एक एक्सेसिव, एक बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की इच्छा रखना, गेन करने की, भाई ये डिज़ायर चाहिए उसको, किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा, अपने डिज़ायर्स को। सो अनरिस्ट्रेन्ड सेल्फ इंटेलिजेंस। सो सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है? सेल्फ इंटरेस्ट लीड्स टू what? It leads to insensitivity towards the problem of other human beings, and self-indulgence lead to more and more production, more consumption of goods than was required. So over dependency upon machinery, and thereby resulting in attaching undue importance to it. So this lead to human beings reduced to helpless spectators and representing a new kind of slavery which is more comfortable and invidious and more dangerous therefore. सो आई होप आपको ये फर्स्ट पैरा क्लियर है कि भाई मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो बॉडी को इम्पोर्टेंस देती है, प्रिविलेज देती है ओवर सोल, एंड उसकी वजह से होता है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है? इनसेंसिटिविटी आती है टुवर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग, और दूसरी क्या प्रॉब्लम थी? अनरिस्ट्रेन्ड सेल्फ इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से मोर एंड मोर प्रोडक्शन, मोर कंजम्पशन ऑफ गुड्स देन रिक्वायर्ड, ओवर डिपेंडेंस अपॉन द मशीनरी, एंड दिस ऑल लीड्स टू human beings reduced to the helpless spectators, a new kind of slavery which is known as more comfortable, envious and more dangerous. Okay. Now modern civilization also emphasized upon speed and hence always um, on the move, leading to disruption of man's relation with his environment and making him lose his identity in the process. So modern civilization हमेशा स्पीड पे emphasize करती है, स्पीड पे, and which also violate or spoil the relation with the nature. नेचर के साथ तो रिलेशन खराब हो ही जाता है, राइट। सो constant movement lead to the loss of sentiment of goodwill and mutual concern, and therefore community living was made possible only through instilling fear of law. तो एक मतलब अपने मन से एक म्यूचुअल वो ख़त्म हो जाता है, एक सेंटिमेंट ख़त्म हो जाता है, लॉस ऑफ सेंटिमेंट ऑफ अच्छाई वाला जो गुण है ना हमारे अंदर से वो ख़त्म हो जाता है। हम लॉ के डर से सिर्फ हम कुछ अच्छा करते हैं, वरना तो कुछ अच्छा नहीं करते। एंड जो सेल्फ इंटरेस्ट है, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट विच इज़ एडमायर्ड एज अ क्वालिटी ऑफ लिबर्टी इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, लीड टू सेल्फिशनेस एंड immorality, and it also lead to centrifugal society rather than centripetal society. So you know difference between centrifugal and centripetal. सो बेसिकली द सेंट्रीफ्यूगल सोसाइटी में क्या है? जो लोग हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पुल हो रहे हैं, पुल अपार्ट हो रहे हैं। एंड सेंट्रीपीटल सोसाइटी जो है वो लोगों को पास लाना सिखाती है, ठीक है। सो ये पुल करती है लोगों को एक दूसरे से दूर, और ये पुश करती है। सो सेंट्रीपीटल सोसाइटी को ये लीड करने की बजाय सेंट्रीफ्यूगल कर रहा है, लोगों को दूर कर रहा है आपस में, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी हम आगे चलते हैं रैशनलिटी
rationality versus faith, a naive rationalism. So let's understand this. Since modern civilization laid emphasis on scientific methods and rationality, religion and faith had no place in it. So जैसा कि हम जानते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज है साइंटिफिक मेथड्स पे और रैशनैलिटी पे. सो रिलीजन और फेथ का तो वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस बचता नहीं है. सी जब हम साइंटिफिक मेथड्स की बात कर रहे हैं सो वी नो साइंस और उसके साइंटिफिक मेथड्स. ना रैशनैलिटी का वैसे क्या मतलब है. रैशनैलिटी एक ऐसी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ बीइंग बेस्ड और इन अकॉर्डेंस विद अ रीज़न और अ लॉजिक. तो जब बात लॉजिक की चलती है तो वहाँ पर रिलीजन और फेथ में तो फ़र्क है, वो तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में होगा नहीं. सो अकॉर्डिंग टू गांधी's blind belief in omnipotence of a reason. सो जब गांधी जी का जो ब्लाइंड बिलीव है इन द omnipotence of reason was the worst kind of idolatry. सो omnipotence का मतलब है कि एक अनलिमिटेड ग्रेट पावर, कि भाई रीज़न देने की एक जो ग्रेट पावर है वो वर्स्ट काइंड ऑफ क्या है, आइडोलेट्री है. सो रैशनलिज्म जस्टिफाइड द एनस्लेविंग ऑफ द पीपल. सो बेसिकली भाई गांधी जी ने एम्फोसाइज, मॉडर्न सिविलाइजेशन एम्फोसाइज करती है साइंटिफिक मेथड्स पे और रिलीजन का कोई प्लेस नहीं है. सो रैशनलिटी जस्टिफाइड the unslaving of the people from another country in order to civilize them, because imperialists thought their rulers' understanding of things was right. So rationalism also ignores the fact that people differ from each other in terms of nature, that is स्वभाव. राइट. तो ओवरऑल ये रैशनलिज्म वर्सेस रैशनैलिटी वर्सेस फेथ का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे जो मैंने बताया था, बीकू पारिक ने बोला, दैट इज वायलेंट स्टेट स्टैटिस्ट कल्चर. सो दैट स्टैटिस्ट कल्चर जो है वो एक डायरेक्शन है एंड कंट्रोल है इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स का. मतलब सब जो पूरी पावर है वायलेंट स्टेट में वो हाईली सेंट्रलाइज्ड है और यहाँ पर सिर्फ इन्हीं का कंट्रोल है, यानी कि गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है. स्टेट हैज़ ओनली द कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स. सो हाईली सेंट्रलाइज्ड modern state was also the product of modern civilization. People with no sense of commonality can be kept together only through ruthless state. Hence, domineering state was a necessity. So, even democracy suffered from this defect. So, ये सब समझ में आपको आ गया होगा कि बीकू पारिक के तीन ये पॉइंट ऑफ व्यू थे. किसको लेके, मॉडर्न सिविलाइजेशन को लेके. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स रिस्पॉन्स टू मॉडर्निटी. अब ये 3 अचीवमेंट्स हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के. अभी हमने डिसएडवांटेज पढ़ी थी, अब हम 3 एडवांटेज पढ़ेंगे. पहला एडवांटेज, साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. दूसरा एडवांटेज, अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड एंड ब्रिंगिंग इट अंडर द ग्रेटर ह्यूमन कंट्रोल. एंड तीसरा पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल साइड ऑफ लाइफ. सो पहला पॉइंट है, पहली अचीवमेंट है साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड एंड ब्रिंगिंग इट अंडर द ग्रेटर ह्यूमन कंट्रोल. एंड तीसरा, कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल साइड ऑफ लाइफ. सो गांधी जी का कहना है कि जो साइंटिफिक स्पिरिट है इंक्वायरी की वो सफ़र्ड फ्रॉम बीइंग डिफाइंड एंड नैरोली पॉजिटिव
positivist, positivist and narrowly positivist and aggressive terms में, and he extended it to those areas of life which was least applicable. So the matters of faith are better left outside the scrutiny of reason. Understanding of world and bringing it under human control had saved man from deadly diseases, ill health, but created a morbid fear of death. एंड अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ की, it had cultivated the civic virtues, respect for rules, subordination of individual to collective good, but reduced morality to enlightened self-interest. So by focusing on institutional importance, it has left no scope for diversity and freedom of concise. Human initiative is also killed in the quest of comforting. ऐसा गांधी जी का मानना है. सो बेसिकली गांधी जी का ये कहना है कि जो क्रिटिक है ना मॉडर्न सिविलाइजेशन का है वो एक पर्सपेक्टिव है, नॉट अवेलेबल इन द वेस्टर्न क्रिटिक्स. It has led to disadvantage because through materialistic at level of modern civilization also has a moral and spiritual dimension. Now talking about David Haridamayan and alternative modernity. So ये एक dialogue है between Gandhi and modern civilization. In this dialogue, Gandhi appreciates some of the features of modern civilization and rejects others. Gandhiji supports, for instance, the modern concept of human rights, fundamental equality of all the humans, right of all to democratic representation, persuasion rather than coercion, etc. And Gandhi, however, criticizes modern civilization for इन बातों पे उन्होंने वो करा. देखो ये जो बातें हैं गांधी जी को भी बस सपोर्ट में थे. और क्रिटिसाइज किस किस बातों को करा? रैशनलिज्म को करा, लैक ऑफ मोरालिटी को करा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को करा जिससे कंज्यूमरिज्म और ग्रीड सिस्टम बढ़ा है. तो Hardiman believes that we commit the error of judging Gandhi by Western standards according to definition of modernity given by West. So the alternative modernity is neither traditional nor totally in agreement with the Western concept. So जो गांधी जी का अल्टरनेटिव मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है हिंद स्वराज में मेंशन है, वो आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन देता है आर्कैडियन लाइफस्टाइल का. So in Hind Swaraj, Gandhi criticizes modern civilization for creating immoral society by judging progress in terms of technological development which were aimed at increasingly bodily comforts. So alternative modernity of Gandhi comes into play. So मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि गांधी जी के अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन स्टैंड्स फॉर गुड मॉरल कंडक्ट and having mastery over mind and passion. So गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है सिविलाइजेशन का वो डिज़ायर है टू लिव इन आर्केडियन सिंप्लिसिटी, दैट इज pastoral life close to nature. For Gandhi meant original or the natural form of living, which is close to natural surroundings. He wanted to disturb nature only as it was absolutely necessary for human existence. So उन्होंने बेसिकली इन्वायरमेंट पे फोकस करा. देन उन्होंने कहा, हरदीमैन ने कहा कि गांधी का जो विजन है ऑफ डेवलपमेंट इन फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वो ये है, स्पिनिंग करो, हैंडीक्राफ्ट डेवलप करो, प्रोपोगेटिंग कम्युनल यूनिटी, मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, विलेज अपलिफ्टमेंट. फिर गांधी जी ने थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप पे भी फोकस करा है, राइट. Now let's talk about Gandhi's influence outside India.
सो आउटसाइड इंडिया भी उन्होंने बहुत सही करा है. आउटसाइड इंडिया ऑल्सो he developed by Suchu Macher in his book Small is Beautiful, published in 1973. It was simpler, cheaper, and freer than super technology of the rich. So ये कुछ इनकी बुक्स हैं. सो जो गांधी जी का जो लॉन्गिंग है रूरल लाइफ का, उसको ओल्ड फैशन लोग समझते थे, एंटी अर्बन, जैसे कि स्कॉलर लाइक रामचंद्र गुहा. बट हरदी मैन डिफेंड करते गांधी जी को बाय स्टेटिंग दैट ही वॉज अवेयर ऑफ sensitive to condition of urban workers and was reflective in speech and action during अहमदाबाद मिली वर्कर स्ट्राइक ऑफ 1918 में जो हुई थी. ऐसा नहीं है कि गांधी जी को अर्बन वर्कर्स की टेंशन नहीं है. तो गांधी जी जो है कंस्ट्रक्टिव पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, एज ही since he places virtue at the center of its writing. And Gandhi ji did not believe in universal truth. So Gandhi ji refused to believe in universal truth, objective knowledge, and master narratives. His opinion at the human beings can only partial and contingent truths. His idea of truth was truth in action, which means location of truth with facts and circumstances. So I hope guys आपको गांधी जी के आइडिया समझ आ रहे हैं. So Gandhi's acceptance of vegetarian was a symbol of progress for mankind in the path of civilized life. उन्होंने also focus on the views of भगवद गीता. सो भगवद गीता पे भी फोकस करा गया है. ठीक है. सो बेसिकली जो गांधी जी की कंटेम्प्रेरी है, गिफ्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन लाइक प्रोग्रेस, रैशनैलिटी, मैकेनिज्म. गांधी वॉज फ्री फ्रॉम ऑल दिस.